डॉक्टर से सुनेंगे, अक्सर ज्यादा चर्चा हार्ट अटैक्स की होती है, लेकिन ज्यादा ब्रेन अटैक एल्डर्स में पाया जाता है। ये एक फैक्ट है। सो लेट अस लर्न फ्रॉम द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर पी एन रंजन, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और स्ट्रोक के एक्सपर्ट है। So it is a pleasure, sir, that we are hearing Dr. P.N. Renjen to talk about brain and heart attack DO. So welcome, Dr. Renjen, once again, and thank you so much for sparing your time. Your slides are visible. You may please. Thank Yes, you very your much, slides are Dr. visible, sir. Yeah, thank you, Dr. Grewal. Namaskar. Thanks everybody who have logged in. And जितना भी मैं डॉक्टर ग्रेवाल को थैंक कर लूं, बिकॉज मुझे बड़ा मजा आता है when I'm called to talk about brain attack, because I got a passion for that. Very nice. Or I think Dr. Grewal is doing a tremendous job by doing this, because I feel so happy कि एक मैसेज जा रहा है कि अपने हार्ट अटैक के लिए तो आप भागते हैं, अपनी ब्रेन का भी ख्याल कीजिए। ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट से भी है। Beautiful. Beautiful. ओके, नाउ डॉक्टर ग्रेवाल ने एक नया वर्ड दे दिया है, चौपाल। एक्सीलेंट वर्ड, क्योंकि हमने अपोलो में एक नई चीज शुरू करी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। हमने उसको कहा है स्ट्रोक पंचायत। Very nice. आपको जैसे पता है कि स्ट्रोक इज अ प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एंड रूरल इंडिया, और हम सबको यही पता है कि 80% 60% पॉपुलेशन हमारे रूरल इंडिया में रहती है। तो फैसिलिटीज अवेलेबल इन रूरल इंडिया आर सो पुअर, उनकी अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट स्ट्रोक इज सो पुअर दैट हमने ये फर्स्ट स्ट्रोक पंचायत होल्ड करी और उसके साथ एक स्ट्रोक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, ये कहने के लिए इफ योर हेल्थ इज गुड यू विल नॉट हैव अ स्ट्रोक। सो इफ यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अगर आप अपनी हेल्थ का केयर करते हैं, ना आपको हार्ट अटैक होगा, ना आपको ब्रेन अटैक होगा। नेक्स्ट, ये दो चार, छोड़ देना उसको यार, ये दो चार पिक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं, हमने स्ट्रोक प्रोग्राम किया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ये है कि एवरी ईयर, हर साल 12 मिलियन पीपल थ्रू आउट द कंट्री डाई ऑफ अ हार्ट अटैक और अ स्ट्रोक। These disease doesn't distinguish between the poor and the... Sorry, Dr. Renjen, इसको आप full slide कर सकते हैं, please? हाँ सर, फुल स्लाइड कर देते हैं सर, बिल्कुल। Yeah, thank you. Okay, more people think that diseases of the middle-aged men is different. The truth ये है कि आदमी और औरत में हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक दोनों इक्वल फ्रीक्वेंसी से होते हैं। बट अच्छी न्यूज ये है कि अगर आप करेक्ट स्टेप्स ले, आप हार्ट अटैक को भी, आप स्ट्रोक को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं ये कहना चाहूंगा, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल who suffer a stroke are older age group. They are above the age of 65 years. इसलिए जब डॉक्टर ग्रेवाल ने मुझे कहा कि what is the correlation between a heart attack and a brain attack, I thought ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकूं कि ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक उतने ही इंपॉर्टेंस है। मैं छोटा सा एक इंसिडेंट देता हूं जो एक 10 दिन पहले मेरे पास हुआ। एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को हार्ट में दर्द थी, राइट साइडेड स्ट्रोक हुआ। वो हार्ट हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां पे एंजियोग्राम हो गया। एंजियोग्राम होने के बाद वो पेशेंट मेरे पास आया
और मैंने उसको देखा और मैंने उस पेशेंट को, उसको फ्रैंक स्ट्रोक था। तो ये डॉक्टर ग्रेवाल ने बिल्कुल ठीक कहा, ये अनकॉमन नहीं है कि स्ट्रोक के पेशेंट हार्ट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वहां पे उनके एंजियोग्राम भी हो जाते हैं। उसके बाद जब रियलाइज करते हैं कि इसको तो भैया स्ट्रोक था, इसको तो न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, और उसमें क्या होता है कि आप टाइम वेस्ट करते हैं, जो आपका अच्छा पीरियड या गोल्डन पीरियड है उसको आप मिस कर जाते हैं। आपको सबको पता है द लास्ट 2 decades has made major progress in the diagnosis and treatment of stroke. रिसेंटली मेरे को पूछा गया कि तुमने न्यूरोलॉजी क्यों करी, इसका तो कोई 30 साल पहले जब आप न्यूरोलॉजी, मैंने कोई इलाज नहीं था। मैंने यही कहता हूं कि मैं इसलिए न्यूरोलॉजी करी कि मुझे पता था 20-25 साल के बाद हर एक चीज का इलाज आएगा न्यूरोलॉजी में, आज वो ही है। अब सो मच आ गया है कि वी ऑल्सो टॉक अबाउट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। अब मैं आपको ये बताऊं गुड न्यूज कि मैं अपोलो में स्टार्ट करने वाला हूं प्रिवेंटिव स्ट्रोक क्लिनिक। हाउ टू प्रिवेंट अ स्ट्रोक, कि स्ट्रोक होने के पहले ही उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो आपको पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। मिनट्स कैन सेव मेमोरीज, minutes can save lives, and minutes can save so many good things which you want to know in life. Next, please don't let your stroke you from being you. Please learn the signs and symptoms of stroke, which are very, very simple, which I'll come to. Next, what is a heart attack? Heart attack और brain attack कोई डिफरेंट नहीं है। अब मैं उसमें डिफरेंट की बात पे भी नहीं जाऊंगा, पर मैं तो यही कहूंगा कि हार्ट में भी वही होता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, द ब्लड फ्लो इज कट ऑफ, द डिक्रीज इन ऑक्सीजन, एंड दे कैन कॉज लास्टिंग डैमेज टू द ऑर्गन। व्हेन द ब्लॉकेज इज सडन, एकदम जब ब्लॉकेज होगी तो आपको सडन हार्ट का पेन होगा और आपको सडन हार्ट अटैक होगा और आप सडनली ही हॉस्पिटल भागेंगे। हार्ट अटैक, ये देखिए ये पिक्चर आप लोगों को देखिए सही लगेगा कि ये कॉर्नरी आर्टरीज हैं। This is the damaged vessel when a coronary artery, a heart की artery is blocked. And of course, when the artery is blocked, उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जाता, जिसको आप कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसको मैं ब्रेन के लिए कहता हूं ब्रेन इन्फॉक्शन या सेरेब्रल इन्फॉक्शन। दोनों का मतलब एक ही है। इन्फॉक्शन मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट, व्हाट आर द साइंस ऑफ अ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के साइंस थोड़े डिफरेंट है। आपको सबको पता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, प्रेशर, स्क्वीजिंग, फुलनेस, पेन, बर्निंग, स्वेटिंग, अपर बॉडी डिस्कम्फर्ट, वेरी कॉमन, नेक, जॉ, शोल्डर्स, आर्म पेन, नोजिया, वॉमिटिंग फीलिंग होना, स्ट्रेसनेस ऑफ ब्रेथ, लाइट हेडेडनेस। सो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको, आप किसी अस्पताल में भी हो, अगर आपको हार्ट अटैक है तो ब्रेन को जरूर इवेलुएट करिए। और vice versa is more important. Vice versa is that if you have had a stroke, please, please, please evaluate your heart and the arteries of the brain. Next. So what is a stroke? As I always say, we all know about heart attacks, but we hardly know about stroke, which is a brain attack. Everybody talks about heart attack. Nobody talks कि brain attack में भी कुछ होता है। Now, next. We all know about the heart, but we know the stroke is a brain attack, and the brain controls every vital organ of the body. Next. What is the definition of a stroke? ये तो आपको सबको पता है, ये पिक्चरें आपने पहले भी जरूर देखी होगी। एक कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जहां आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। एक कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक, जहां ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण
आर्टरी जो है वो बर्स्ट कर जाती है। नेक्स्ट, नाउ आपको पता है कि 85 आर स्ट्रोक्स विच आर बिकॉज ऑफ ब्लॉक आर्टरी, एंड इनमें इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज ये है, स्पेशली इन द एल्डरली, दैट 50% स्ट्रोक इज बिकॉज कि क्लॉट आर्टरी से बनकर ब्रेन में चला जाता है। What is important above the age of 60-65 years, which is called embolic stroke? Embolic stroke का मतलब है कि एक क्लॉट कहीं से बना है और वो क्लॉट डिसलॉज होके ब्रेन में चला गया है। इसको, और द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एम्बॉलिक स्ट्रोक व्हिच आई विल कम टू इज इन द हार्ट। So that is why I say the workup of stroke is not complete if you have not looked at the heart, if you have not looked at the other vessels of the body, including the kidney. That will complete your stroke examination. Next. Now, the symptoms of stroke, आपने ये पिक्चर पहले मैंने आपको दिखाई होगी। अगर राइट ब्रेन में इंजरी हुई हो तो अलग होता है, लेफ्ट ब्रेन में अलग होता है, क्योंकि जो लेफ्ट ब्रेन है उसमें हमारा स्पीच सेंटर होता है। तो अगर आपको लेफ्ट ब्रेन में गड़बड़ हुई है तो राइट साइडेड पैरालिसिस होगा, स्पीच चली जाएगी, बिहेवियर चेंजेस होंगे, मेमोरी डेफिसिट होगी। अगर आपको राइट ब्रेन इन्वॉल्व है, पैरालिसिस होगा, आपकी स्पीच वेल मेंटेन होगी, आपका बिहेवियर खराब होगा और मेमोरी डेफिसिट्स होंगे। तो हम जब स्ट्रोक ट्रीट करते हैं, ये नहीं कि इस पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, इसको स्ट्रोक हुआ, राइट हुआ, लेफ्ट हुआ, क्यों हुआ, क्लॉट कहां से आया, जब तक मैं आपको ये भी बता सकूंगा कि कहां से आया, मेरी ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं स्पॉट अ स्ट्रोक। आप लोग सब अगर इस स्लाइड की पिक्चर भी लेके रख ले तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो डॉक्टर ग्रेवाल जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, it will pay dividends like anything in terms of preventing stroke and improving the life and the quality of life of our elders. B is balance. If you get a loss of balance, headache, dizziness, don't ignore it. If you get blurred vision in the eye, अगर आपका फेस टेढ़ा हो रहा है, अगर एक आंख नीचे हो रहा है, आपको बोलने में तकलीफ है, तो भागो, टाइम। इनमें से कोई भी सिम्टम हो, 60-65 ईयर्स, आप डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो या नहीं हो, आप जरूर अपने आप को एवेल्युएट कराइए। डोंट वेट फॉर द स्ट्रोक टू कम, डोंट वेट फॉर द स्ट्रोक to put you on a wheelchair. We don't want that. We want all of you, all our dear patients, to lead a healthy quality of life. And that can all be achieved because I always say 80% of strokes are preventable. 80%. I mean it what I say. Next. Now, ये स्लाइड तो वही है, इसको कहते हैं TIA। जैसे ब्रेन का इंजाइना है, सॉरी हार्ट का इंजाइना है, वैसे ये ब्रेन का इंजाइना है। मैं तो हर एक पेशेंट को यही कहता हूं, इट इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट एवरीथिंग विद द ब्रेन। नेक्स्ट, देखिए ये कई मिथ्स है, वो प्लीज निकाल दीजिए दिमाग से और सबको बताइए कि ये मिथ्स है, ये गलत फीलिंग्स है। जब मैंने शुरू किया स्ट्रोक आज से 30 साल पहले, स्ट्रोक में क्या है, स्ट्रोक में कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, प्लीज रिमेंबर, मिथ ये है, इज नॉट प्रिवेंटेबल, कैन नॉट बी ट्रीटेड, इट स्ट्राइक्स द एल्डरली, happens in the heart, recovery ends after 6 months. They're all myths. The reality is, come to the reality, up to 80% of strokes are preventable. 80%. Stroke requires emergency treatment. Can one have a stroke? Stroke
is a brain attack, stroke recovery can even last long time or even lifelong. So don't be in the impression कि मेरी अब रिकवरी 6 महीने हो गए, मेरी रिकवरी नहीं हुई तो अब नहीं होगी नेक्स्ट. एक हमारे देश में इंसिडेंस स्ट्रोक बहुत बढ़ता चला जा रहा है. क्यों बढ़ रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वो तो बड़ी अच्छी बात है. अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग विलेज से माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज को. लाइफस्टाइल, sedentary habits, smoking, alcohol, and rising stress levels in life. So, stroke is a lifestyle related disease. So, you have to understand one thing, that you have to modify your lifestyle. Next. ये देखिए जी, ये please, 1 in 4 people have stroke. Please don't be the one. Stroke matters. It can occur to anywhere, anytime. It's a leading cause of disability worldwide, and the second most common cause of death. But almost all strokes can be prevented. I'm really worried about always that it is the leading cause of disability. Next. Next. Now, this is just a study which said that there is a country specific, and which is very high in our country, of risks of stroke in the lifetime. In 2016, the risk of stroke from the age of 25 years was 20%, 5% among both men and women. And there was a geographical variation that it was highest in Asia, Central Europe, and Eastern Europe. So we are racially more prone to get strokes. So we need to be more careful than what we talk about next. Now, please remember, every minute counts. मुझे अभी हुआ स्ट्रोक, अरे आधा घंटा वेट कर लेते हैं. Please don't do that. Every minute you lose neurons, आपके nerves फैल जाते हैं. You lose fibers and आपका aging process बढ़ जाता है. Next. Now, what is stroke prevention? As I always say, I said 80%, but some say up to 90% of stroke could be prevented. 90% or 80% भी आप लेके चलो. But by addressing, by looking after the risk factor, hypertension, diet, smoking, exercise, not at all difficult. Preventive action on stroke would also contribute to a massive reduction in stroke and would contribute to reduce cerebrovascular disease, cancer, diabetes, and other significant causes of death and suffering worldwide. So these are, जिसे मैं हर समय कहता हूं, modifiable risk factors of stroke: hypertension, diabetes, smoking, exercise, moderation, lifestyle. इसमें मैंने रिसेंटली हमारी कॉन्फ्रेंस पे करके एक नई चीज ऐड करी है, जिसे हम कहते हैं स्लीप डिस्टर्बेंसेस, जिसे अपनी लैंग्वेज हम कहते हैं OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. तो एक स्ट्रोक स्पेशलिस्ट को हर समय ये देखना चाहिए कहीं किस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है, विच इज कॉमन इन एल्डरली. अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो you are still at 20% more higher chances of having a stroke. So these are the modifiable risk factors of stroke which we have. Next. Now, hypertension, smoking, lipid, diabetes, obesity, आपको सभी को मालूम है. Next. Other risk factors, अगर आपको छोटा स्ट्रोक हुआ हो, लाइफस्टाइल खराब हो, आपको हेडेक्स हो, अगर आप एडिक्शन करते हो, heavy alcohol, pregnancy, and oral contraceptive. Now, how does the heart contribute to a stroke? Please concentrate on this slide. How does the heart lead to stroke? The commonest thing is what is called atrial fibrillation. I have done a lot of work on this, and we are trying to pick up people
when they develop frank atrial fibrillation. Atrial fibrillation is an arrhythmia where the left side atrium beats very fast and produces clots in the brain. Before atrial fibrillation sets in, I have been working on that. Can we have other factors as preventive to pick up a preventive stroke? Heart diseases, cardiac lesion, heart attack itself, a heart failure, an acute heart attack, a large heart attack, and obviously certain rarer things which I will not go into. But the most important thing I would say, heart, arrhythmias, acute myocardial infarction, heart failures. These are how the heart and the brain stroke is linked. It is the same stroke which occurs. The symptoms are not different. It's for you, it's for the clinician to be aware that am I dealing with a heart problem which is causing this stroke to my patient. Next. Very frequent is atrial fibrillation. 12 to 18% of all strokes. This would be higher in the left atrium or ventricle. So I see a stroke after the age of 65. I go all out to pick up any atrial fibrillation or flutter in these patients because I have an excellent foolproof method of preventing stroke. Next. Stroke prevention in the elderly. This was a review article which I was just reading, and it is an eye-opener that we should all concentrate on prevention of stroke in the very elderly. Whether it's 65, 75, it is a bound duty, not go by the age, and see how we can prevent stroke in our elderly population. Next. Two things: treat hypertension if you have atrial fibrillation. Secondary prevention is again, if you have blood pressure, treated, cholesterol, diabetes, antiplatelet agents. So this is the primary prevention and the secondary prevention, which practically remains same for the heart and the brain attack. Next. So this is important. Identify and treat atrial fibrillation. People with abnormalities at the heart are likely to have 5 times more stroke than the general population. So please be aware. How do you think from your point of view, if you find that the pulse is irregular, if you find that the pulse is fluctuating, I think from your point of view, do an ECG and immediately your cardiologist or your neurologist. Reduce your intake of alcohol, reduce your cholesterol, manage diabetes, exercise 5 times per week for 20 to 30 minutes, have a healthy, balanced diet. As you all know, now more and more people are talking about a healthy, balanced diet. Control high blood pressure, stop smoking, very bad from the stroke point of view. Maintain a healthy weight, very important. Maintain stress, manage stress and depression. And God forbid if you have a stroke, we have lots of good treatment. We have thrombolysis, thrombectomy, other things to help you out. And we all know that now more and more people are getting interested in thrombolytic therapy, which we are actively involved in too. So I would just say that now we will offer you thrombectomy from 6 to 24 hours after a stroke if you come early to us. So this is what we are going through. So this is a stroke walkathon which we had involved to make people aware, to get into their minds set, to change the mindset that stroke is treatable and stroke is preventable. Ladies and gentlemen, I thank you all for a very patient hearing. I hope I've been able to convey what I really wanted to convey from my heart.
that how do we take care of the elderlies? How do we prevent a stroke in the elderly? We have an active Apollo Stroke Awareness Program. I always say keep calm, and I love neurology, and I hope all who do neurology love neurology. Thank you very, very much. Thank you so much, Professor Renjen. It was not a lecture, it was music, it was a song. Can I add you? I'm not yet being able to see your See my camera. face, like I can see your face. पता नहीं क्या हो रहा? I can see your face. अभी आ नहीं रहा यार इधर. अच्छा, कोई बात नहीं. I think Dr. Ranjan is behind the curtain. So most important, I think एक लाइन आप सबको हिला देनी चाहिए. 90% strokes are preventable. इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकता. एंड कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट लाइक प्रोफेसर रंजन, इट मींस बिजनेस. सो इससे ज्यादा क्या मैसेज मिल सकता है आपको, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ कहने पे, कि जो स्ट्रोक अधरन जिसके साथ डिपेंडेंसी हो जाती है, लाचार हो जाते हैं लोग, उससे आप बच सकते हैं. आई मीन इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो. वो गाड़ियों में एयर बैग्स लगा देते हैं, बेल्ट लगा देते हैं, बट जब तक आप ना सीखें गाड़ी चलाना तो नहीं पॉसिबल. एंड लास्टली, जो सबसे इस टॉक की जो भूमिका है, कि हार्ट अटैक के जो कारण है वही कारण ब्रेन अटैक, लेकिन हार्ट की वजह से जो ब्रेन अटैक होता है वो एल्डर्स में कॉमन है. प्रोफेसर रंजन, वन क्वेश्चन. डू यू सजेस्ट, व्हेन आप कह रहे हैं एट्रियल फिब्रिलेशन एल्डर्स में बहुत कॉमन है, एम्बोटिक एम्बुलेंस बड़ा कॉमन है, क्या ए पर्सन हुज हैविंग ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट, मैं डायबिटिक अभी नहीं जोड़ रहा हूं, what would you suggest that every elder should have a Holter done? If so, how frequently? It's an excellent question by Dr. Grewal, that you have an elderly who is 65, he is hypertensive. When do you do an echo? Or when do you do a holter That's to right. pick up AF in him? Wonderful question. One, this AF is asymptomatic. We have symptomatic AF, we have asymptomatic AF. We treat symptomatic AF, we treat asymptomatic AF. AF is atrial fibrillation. Sorry, AF is हार्ट रेट आपका 190-220 तक चला जाता है. correct. I'm sorry for using that word. It is atrial fibrillation. Atria is the left part of the brain, the left atrium, which squares. And it throws the emboli into the brain. Yes, I would say that every patient should have an echo of the heart at least once in a year to see what is his ejection fraction, to see whether he has had some silent heart attack. 3, to see whether at any point of time he develops a left atrial enlargement. The early sign of AF or atrial fibrillation is the enlargement of the left atrium. Number 1. Second question, very pertinent again. How often or should you do a Holter at all? My answer to that question of Dr. Grewal is, you need not do Holter every now and then, but at any stage you find that the patient develops an abnormal pulse, you should go ahead and do a Holter test. And if a Holter is done today and उसमें कुछ abnormal readings आई, when would you repeat a Holter? अगर उस होल्टर में आपको एफ या एटीएल फ्लटर आया है तो आप स्ट्रेट अवे इन पेशेंट को एंटीकोगुलेट करोगे, because they are at a higher chances of embolization. Now, when would you use the next holter? Maybe 6 months to 1 year down the line, but that's not important. The important is that they need to be treated though they are asymptomatic atrial fibrillation.
सबसे जरूरी तरीका प्रिवेंशन का डॉक्टर रंजन ने अभी बताया। आप एक इको कराइए ब्रेन को बचाने के लिए, हार्ट, केवल हार्ट के लिए नहीं, ब्रेन को बचाने के लिए एक इको, और एक ईसीजी या इको के बाद में उसमें नजर आया कि कुछ थोड़ी आपकी हार्ट रेट थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ, तो एक होल्टर टेस्ट। और अगर होल्टर में, जो कि आपको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर होल्टर में नजर आया कि बीच में आपका हार्ट नब्ज जो थी एकदम बढ़ी फिर ठीक हो गई, तो आपको एक दवाई दी जाएगी जिससे आपके हार्ट के अंदर क्लॉट बन के ब्रेन में ना जाए और आपका स्ट्रोक बच गया। तो एक सिंपल टेस्ट जो कि हार्ट का टेस्ट है, लेकिन अधरंग को बचाने के लिए वो टेस्ट बहुत कारगर है, बहुत कारगर है, और एक टैबलेट लेने से प्रिवेंशन हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, प्रिवेंशन पे इतना जोर दे रहे हैं डॉक्टर रंजन, क्योंकि इन्होंने देखा है कि जिनको इन्होंने जल्दी पिकअप किया उनको अधरंग से बचा पाए। और अगर लास्टली, everybody beyond 65 is at high risk to get a stroke without any symptom. Therefore, क्योंकि आप सब 65 से ऊपर हैं, अगर आप में से किसी को भी वो फास्ट वाली आइटम सामने नजर आए तो इमीडिएटली रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर बाजार में जा रहे हैं और आपको मिट्टी पड़ गई, धूल आ गया तो आपको मेरे को स्ट्रोक आ रहा है। इट हैज टू बी इन ए पर्सन एट ए पोजिशन, सडनली कोई चीज पैदा हो। सो फास्ट जब कभी सस्पिशन हो, और प्रिवेंशन में जो आपको बताया गया है, कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, control your heart rate, and you can prevent it. We'll now take questions, Professor Renjen. Mr. Mehra is asking if there is only sensory loss of lower limb and no motor loss. Is this the type of stroke? Sir, there are also strokes, उनको हम कहते हैं सेंसरी स्ट्रोक्स। देखिए, स्ट्रोक कैन बी सेंसरी, मतलब जैसे आप कह रहे हैं लॉस ऑफ सेंसेशन। स्ट्रोक कुड बी मोटर, loss of motor power. Stroke could be a combination of sensory and motor. So there are strokes which are called sensory stroke. और ऐसे स्ट्रोक छोटे क्लॉट से आते हैं जिनको हम कहते हैं लेकिनार इन्फार्क्ट। और ये लेकिनार इन्फार्क्ट यूजुअली थैलेमस में होते हैं। Thalamus is the area of the brain which is the bandmaster for all sensation. So Okay. you could have an isolated sensory stroke, which is not at all uncommon. Lot of time we see sensory strokes. So they have to be treated as enthusiastically as you would treat a motor stroke. I think Mr. Mehra, you got your answer. जब आपने पूछा what is solution, solution is कि उनका उसी तरह इलाज होगा जाकि बाकियों का। Dr. Parminder Singh is asking, is low dose aspirin recommended for the elderly as a prevention of stroke? At this stage, can I ask him something? Dr. Yeah. Grewal? Yes, when you are talking of sensory stroke, do you mean it is a parietal lobe involvement? Because there you only get this type of lesion, not the motor. They will have a variable plantar, they may have two sensory inattention, they may have all this function. Dr. Renjen, that is General SP Kalra, please asking a question. So parietal lobe involvement does give this type of lesion where one gets this picture of sensory. The most commonly sensory stroke are thalamic strokes. You may see why I said that was you could have a just isolated tingling and numbness involving one half of the body without motor involvement. But the parietal strokes, sir, associated with the sensory involvement, you would have some motor involvement also. That's why the question was sensory stroke, and that's why I gave the answer. They are thalamic strokes. Okay. And Dr. Parminder Singh's question on aspirin as prevention for stroke. Very good question, very pertinent question. And I've been reading about it a lot, and I read a couple of articles that is there any role of aspirin in stroke prevention in the elderly? One,
say you are 65, 70, you don't have diabetes, you have a hypertension, you are leading a normal quality of life, I don't think aspirin is indicated. Very important. Because there have been large number of studies. Two of them I remember which came in the Lancet. One was 22,000 patients and other was 22,000 individual. They found that very slightly the chances were hemorrhage were higher in the patient who were given aspirin than those who were not given aspirin, though they did not change the stroke rate. So They did I not. personally don't give aspirin to healthy individuals. Maybe if I've got a 65 years old gentleman who's diabetic, who's hypertensive, who's got hypercholesteremia, raised triglycerides, I will give him aspirin definitely, and I will even give him a statin. So I will usually use a statin also. As you know, statins are again, they have some amount of antiplatelet effect, but most important आपके statin जो है ये आर्टरी की वॉल को स्टेबलाइज करते हैं. जो आर्टरी की एंडोथेलियल वॉल है जहां पे ये एम्बोलाई बनते हैं उनको बनने नहीं देते. So that is what the logic is. So aspirin is not across the board. Absolutely not. Absolutely. I think in one of these, Dr. Grewal, if you give the permission, in one of these meetings of yours, he will talk about this. Right, sir. The next question by Dr. Jayarath, let Dr. Rashmi Mohan ask and then I'll come to you. Yes, Dr. Rashmi. Sir, if someone who is 70 years old and incidentally bilateral frontal lobes have shown lacunar infarcts, but the patient is well-controlled hypertensive and hypothyroid, HbA1c is 5.7 and lipid profile is normal, then does that patient need antiplatelets? Good question again. And sorry, one thing more. Hanji, And the Hanji. patient is complaining of very transient episodes of lightheadedness off and on. When the number of these symptoms of lightheadedness with the elderlies come and tell us we should not ignore them. Lightheadedness. मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे सिर में कुछ हो रहा है. And madam, there are lacunar infarcts, which are in the frontal lobes, and we know the frontal lobe is responsible for executive functions. You may not have frank memory disturbance, but your judgment, your executive function all comes from the frontal lobe. So if a patient is a thyroid, he's got blood pressure, he's got lacunes, I would certainly say that he should be given antiplatelets and statins. Very nice answers. Dr. Jayarath, please. Unmute yourself, Dr. Jayarath. Rajesh, unmute yourself. We can't hear you. Meanwhile, Mr. Markin, you may ask. Sir, I have a specific question. For a heart patient who is with the cardiac medicines, having blood thinners and statins and everything, is he susceptible to have a brain stroke? And what precautions, if so, what kind of precautions more he should take to prevent brain stroke? Very nice. We see this quite often, sir. This is not an unusual situation. That the patient is on heart attack and he's taking aspirin, he's taking Stormas or one of those drugs, and he's taking, some of them are even taking clopidogrel or aspirin, they develop a stroke. One thing which you have to clear about is, sir, that are they patient taking the medicines regularly? Two, sir, aspirin is not the drug for cardioembolic strokes. The drug for cardioembolic stroke is oral anticoagulation. Oral anticoagulation. So if you are having a cardioembolic stroke, the embolus came from the AF, or the embolus came from low stasis in the left ventricle, or the embolus came from the left atrium of the left atrial appendage. These will not be covered by aspirin at all.
Even statins will not help. Statins will not help. This, sir, there have been large studies comparing aspirin and combinations of aspirin and clopidogrel and anticoagulation for secondary prevention. These score about 20 to 30% more. So that is why one should not feel secure that just because I'm taking 75 milligrams of aspirin and 150 milligrams, or 20 milligrams of Storvaz or anyone, I'm a visual stroke. No, the anticoagulant is important, and that is Anticoagulant is important. request So there are two types of it for the benefit of all our. One are, sir, antiplatelets, one are anticoagulants. coagulants. Alag-alag. Aspirin, clopidogrel, they're anti-platelet. ये क्या करते हैं? The blood is flowing. The blood will come and strike against the wall of the artery. They will not get the platelet go up, but an anticoagulant will make the blood thin. So ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. That's important. So you can give a combination of aspirin and anticoagulant. You can. Where you require, certainly you can. You're absolutely, Dr. Grewal is totally right. Dr. Jairaj, please ask. Sir, excuse me. There was one small point more. Yes, But Dr. Renjen had said that ejection fraction also is important for evaluating the stroke. That's right. So in case, just in case, because of the cardiac issues, yes, ejection fraction is limited to 25-30%. Sir, how much risk involvement of stroke is there? That's why Dr. Grewal asked a very pertinent question. That should you do echo? I said yes. Yeah. Sir, if your ejection fraction is 20%, what will happen? Left ventricle में blood रह जाएगा, stasis होगा. Stasis होगा तो एम्बो नहीं करेगा. Ejection fraction अगर 20% है तो वो पंप ही नहीं कर रहा ठीक से सर. So anticoagulant will help more than that anything. So that's very important. It's absolutely right. So, Dr. Jairaj, आपने question पूछिए. Thank you. Sir, my question is, a patient of TIA for last 4 years, treated for antihypertensives plus ecosprin 75, and how long this ecosprin and the medicine should continue? Very good question again. Sir, देखिए ऐसा है that the prevention of cerebrovascular disease, I will put it in a big term, is different for the heart and different for the brain. Because though we compare heart attack, brain attack, the brain attack is different. Its arteries are different. The heart arteries are different. If you have had a TIA, if you had a minor stroke, if you have had a major stroke, the antiplatelet therapy and statins go lifelong. Straight. That's it. Straight on. Malti ji, आपका कोई question था? You had put in a suggestion, Dr. Malti. I can't. छोड़ने जा रहा हूँ. कॉल चल रही है. Malti ma'am, please. Yes, I can put my question now. Yes, So, please go ahead. I really like that, self check कैसे कर सकते हैं कि balance and eye का, face का. So if we do it on a daily basis in front of the mirror, would it help to know in advance? Like, I mean, as a layperson, can I do it? No, and can there be a video to educate people how to go about it? No, ma'am. In my clinic, and as soon as we start the preventive, I would tell every patient and teach them that how to look for it. But ma'am, you can't keep on doing it every day. Till the time you suppose one day your family member say, "यार आपके speech थोड़ी slurred लग रही है. ये आज आपका थोड़ा coordination ठीक. Sometimes one may not feel. आपको कहे आपके your son or your son-in-law or daughter over. आप थोड़ा टेढ़ा चल रहे हैं. That is the time then when be fast comes into the picture. But I would not say that every day in the morning you do be fast. नहीं, morning में नहीं, किसी समय भी during the day मैडम कहने का मतलब वही है. एक कहावत है ना, mirror on the wall, who's the fairer of them all. तो रोज आप अपने fairness को देखते रहें. नहीं, actually what Dr. Renjen is warning, that stroke comes suddenly. It does not come slowly. So even if you're watching every day, you've seen your face, a change in the face
And if you are at risk, agar aapko dar hai, if you choice, but what is important is the moment you notice it, the faster you notice it, the better is the care. Professor Renjen, ye hamare Mr. Gupta hai, who's a first aid expert. His question is, what is the first aid for stroke? Not medicine, but what is the first aid for stroke? The first aid for stroke is one, don't give any antihypertensives in the house. Beautiful, beautiful. Especially, आपको सब पता था एक ड्रग आती है nifedipine, which used to come as sublingual. अभी भी अवेलेबल है, उसका कभी इस्तेमाल मत कीजिए, because we don't know ये स्ट्रोक इस्कीमिक है कि ये हेमोरेजिक है. दोनों में से कोई भी हो, आपने सबलिंगुअल निफेडपिन दिया तो ब्लड प्रेशर 150 से 180 तक आ जाएगा, 80 और 100, and there will be total decreased blood supply in the brain, which is hypoperfusion, and the patient will immediately worsen, which we have all seen in our formative year of life. That's one. Two, if you have a stroke, don't panic, first and the foremost thing. Three, don't, as far as possible, give him anything by mouth. Four, if you have a tablet of Ecosprin, 150 milligrams, and if you have any statin, atorvastatin, simvastatin, जो भी है से, एक statin दे दीजिए. You will prevent the further progression of the stroke. I think most first caution किया इन्होंने कि please do not try and give a blood pressure की दवाई. Number two, very common, people who have got heart problems often have sorbitrate at home. Dr. Renjen, sorbitrate in a stroke is again going to be very detrimental. Absolutely. Sorbitrate in stroke,